Okay, so this is our first sheet of math. Okay, what we have to do in this, इस sheet में हमें क्या करना है? Complete the table of 10. इस sheet में table complete करना है किसका? 10 का. Okay, so what is the table of 10? 10 ones are 10, 10 twos are 20, 10 threes are 30, 10 fours are 40, 10 fives are 50, 10 sixes are 60, 10 sevens are 70, 10 eights are 80, 10 nines are 90, 10 tens are 100. Okay, like this you have to complete all the table. You have to fill the missing numbers in it. Okay, you have to fill the missing number in this table. Okay, and now in the second question, what you have to do? You have to match the following. Okay, here the table is given in the form of dosing. Okay, it is in the dosing table form. Means आपको क्या करना है? आपको numbers match करने हैं with their following multiplication sum. Okay, you have to find the proper answer of the following multiplication sum. Just like 6 threes are 18, so you will match it with 18. 8 fours are 32, you will match it with 32. 9 6 are 54. Like this you have to match them. Okay, so like this you have to do in this sheet. Okay, and the first question you have to complete the table of 10 by filling the missing numbers, and in the second you have to match the following answers with your suitable multiplication sum. Okay, now this is our second sheet of EVS. Okay, what we have to do in this, इसमें क्या करना है हमें? We have to rewrite after correcting the statement. हमें क्या करना है? रीराइट करना है. मीन्स फिर से राइट करना है आफ्टर करेक्टिंग द स्टेटमेंट. स्टेटमेंट को करेक्ट करने के बाद. मीन्स यहाँ 4 स्टेटमेंट गिवन है बट दीज आर रॉन्ग. ये स्टेटमेंट्स रॉन्ग है. एंड व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिकरेक्ट इट. ओके, हमें इसे करेक्ट करना है एंड देन वी हैव टू रीराइट. ओके, फिर हमें राइट करना है. जस्ट लाइक लेट्स सी व्हाट्स द सेंटेंस सेज. वी कैन सी एयर. हम हवा देख सकते हैं. Is it possible to see air? No, it is not possible to see air. Okay, so that is why we cannot see air. This sentence will be we cannot see air. Okay, what we will do? We will change can into cannot. We cannot see air. In the second sentence, only humans need air. सिर्फ इंसानों को, humans means इंसान, सिर्फ इंसानों को हवा की नीड होती है, जरूरत होती है. Is it true? क्या ये सही है? No, it is not true. It is false because everything needs air. Okay, everything needs air. हर चीज को एयर की जरूरत होती है ना. Like animals, humans, plants, fish. So everyone needs air. Everyone needs air. See the third sentence. We can live without air. हम हवा के बिना रह सकते हैं? We can live without air? No, we cannot live without air. We cannot survive without air. Okay, we will change can into cannot. We cannot live without air. We cannot live without air. Now see the fourth sentence. Air is a man-made resource. Air is a man-made resource. Air man-made resource. Man-made resource means ऐसी चीज जो इंसानों ने बनाई. Okay, man-made resource means ऐसी चीज जो इंसानों ने बनाई है. तो क्या एयर इंसानों ने बनाई है? No, air is a natural resource. Air is a natural resource. It is given by God. Okay, it is given to us by nature. Okay, air is a natural resource. Okay,
So what we have to do in the first question, आपको क्या करना है, या आपको इन रॉन्ग सेंटेंसेस को करेक्ट करके रीराइट करना है. ओके, नाउ सी द सेकेंड क्वेश्चन. राइट डाउन 5 यूजेस ऑफ एयर. एयर के 5 यूजेस लिखने हैं. Okay, what are the 5 uses of air? The 5 uses of air can be that it helps in photosynthesis, it helps in burning fire, air helps in burning fire, it helps in photosynthesis process of plants. Okay, it helps human to survive. It helps living beings for survive. Okay, for surviving we need air. Okay, so these are 3 uses, and now you have to write 2 uses of air by yourself. Okay, I have told you 3 ways. First way, it helps the plants to complete the photosynthesis process. Okay, second, it helps in burning fire. Third, it is useful for living beings to survive. Okay, and now in the third question, name any 3 gases present in the air. Okay, हमें क्या करना है, हमें कोई भी 3 गैसेस का नाम लिखना है जो एयर में प्रेजेंट है. ओके, नाउ सी, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस. ओके, बहुत सारी अलग अलग गैसेस हैं, उसका क्या है, मिक्सचर है. क्या, एयर क्या है, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट गैसेस का एक मिक्सचर है. इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, डिफरेंट कंपाउंड्स. ओके, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, अलग अलग गैसेस भी होते हैं. ओके, सो हमें क्या करना है, वी हैव टू नेम एनी 3 गैसेस. एनी 3 गैसेस, गैसेस मींस एनी 3 कंपाउंड ऑफ एयर. ओके, मतलब कोई भी 3 कंपाउंड मींस एनी 3 गैसेस नेम. अब कौन कौन सी गैसेस होती हैं, वी टेक ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन, एंड वी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस. So you can write in the first oxygen, in the second carbon dioxide, OXYGEN, oxygen. Second carbon dioxide, CARBON, carbon dioxide, 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 carbon dioxide. Okay, and the third you can write hydrogen, 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 hydrogen. Okay, hydrogen means water. Okay, जब हम water को heat करते हैं, when we convert it into the vapor form, then it is called hydrogen gas. Okay, जब वाटर भाप बन जाता है तब वो हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, वाटर का जो गैसियस फॉर्म होता है उसको कहते हैं हाइड्रोजन. ओके, सो इन द EVS sheet what we have to do, we have to rewrite after correcting the sentences. These यहाँ पे कुछ सेंटेंस गिवन है जो रॉन्ग है, we have to rewrite them. ओके, हमें उसको सही करके वापस से लिखना है. एंड सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, वी हैव टू राइट डाउन एनी 5 यूजेस. आई हैव टोल्ड यू 3 एंड नाउ यू हैव टू राइट 2 बाय योरसेल्फ. एंड इन द थर्ड क्वेश्चन व्हाट यू हैव टू राइट, यू हैव टू राइट एनी 3 गैसेस प्रेजेंट इन द एयर. एयर में जो भी कोई 3 गैसेस, कोई भी 3, बहुत सारी गैसेस हैं ऐसे तो, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओके, मीथेन, ऐसे बहुत सारी गैसेस हैं, बट you have to write any 3. okay, and ऐसे 3 गैसेस राइट करिए जिनके बारे में आप जानते हैं. so first oxygen, we take oxygen, we release carbon dioxide, and water का जो गैसियस फॉर्म होता है उसको कहते हैं हाइड्रोजन. ओके, so this was our sheet.
in which what we have to do? In the first sheet, we have to complete the table of 10, and in the second question, we have to match the following with their multiplication sum to their proper answer. And in the second sheet of EVS, you have to correct the statement, write down the 5 years of air and any 3 names of. Let's solve the sheet. First of all, let's solve the math sheet, everyone. 10 ones are 10, 10 twos are 20, 10 threes are 30, 10 fours are 40, 10 fives are 50, 10 sixes are 60, 10 sevens are 70, 10 eights are 80, 10 nines are 90, 10 tens are 100. Yes. Okay, fine. 6 threes are 18. 8 fours are 32. 9 sixes are 54. 6 eights are 48. 7 twos are 14. 1 fives are 5. 4 sevens are 28. 5 nines are 45. 2 sixes are 12. 10s are 0. Okay, understood how to complete? Everyone, complete the math sheet and show me, okay? Complete the sheet and show me. Okay, Sumaya, good. Afan, Nisarg. Okay, Adiba, well done. Fine, good. Yes, Adya. Good. Good. Prisha, okay, Prisha, fine, good. Well done, good, Samarth. Okay, Shobit. Yes, Afan. Well, Afan, do the work in the maths notebook, no? Do the maths work in the maths notebook. Okay, Shobit. Fine. I have seen. Very good. So everyone understood how to solve the math sheet? Everyone completed the math sheet? Yes. Okay, fine. Okay, now let's solve the next sheet of EVS. What we have to do in the first question, we have to rewrite after correcting the statement. ये जो 4 statements given है यहाँ पे, ये सब सही नहीं है. These all are wrong. Okay, these are wrong sentences. And हमें क्या करना है? We have to correct them. Okay, these sentences are wrong and we have to correct them. So we can see air. हाँ, हवा देख सकते हैं. Does anyone have seen air before? किसी ने पहले कभी हवा देखी है? Have you seen air? No, we cannot see air. We can not see air. We cannot see air. Only human needs air. क्या सिर्फ ह्यूमंस को ही एयर चाहिए होती है? नो, everyone
Yeah, or you can write all living being. All living being needs need air. All living being need air. All living being need air. Yes, all living beings need air. Okay. We can live without air. No, we cannot live without air. 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 Air is a man-made resource. No, air is a natural resource. Okay, or you can write air is not a man-made resource. ओके, इस सेंटेंस को आप दो तरीके से लिख सकते हैं. एक, एयर इज अ natural resource, and the second, air is not a man-made resource. Okay, yeah. Now see the second question. Write down 5 uses of air. What we have to do, we have to write 5 uses of air. We have to write 5 uses of air. Now tell me, what are the 5 uses of air? Now tell me everyone, what are the 5 uses of air? 5 uses of air. What are the 5 uses? How can we use air? How we use air in our everyday life? हम air को कैसे use करते हैं? How do we use it? What are the use? हम किस तरीके से इसको अपने use में लेते हैं? Tell me. Supply of energy. Yes, air is one type of energy source. Yes, very good, Adya. It is a supplier of energy. Yes. Yes, air needs. Very good, Adiba. For smelling, we need air. अगर air ही नहीं होगा, then we will not get any kind of smell. Not a good smell. Neither we will get the good smell nor the bad smell. But we are blessed to have air. Yes, it helps in maintaining temperature also. Yes, good. Yes, it helps in maintaining temperature. We all need air to survive, na? Every living being also needs air. Very good, Adya, maintaining temperature. Okay, now see, how do air helps in maintaining temperature? एयर कैसे हेल्प करता है टेम्परेचर को मेंटेन? टेम्परेचर मीन्स तापमान. तापमान मीन्स वो क्या होता है? गर्मी. अगर बहुत गर्मी हो और शाम के समय में ठंडी ठंडी हवा चले, कूल कूल, तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? So that is why that is called that air also helps in maintaining the temperature. Okay. Air is needed for ventilation. Yes,
Air is also needed for ventilation. Good. Air is also needed for the process of photosynthesis. जो प्लांट्स पे फ्रूट लगते हैं वो फ्रूट कैसे बनते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके, सो फॉर दैट प्रोसेस एयर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. उस प्रोसेस के लिए भी एयर बहुत ही रिक्वायर्ड होता है. अंडरस्टूड? So there are so many uses. Air gives shape to things. Yeah. No, Adiba, we cannot say that. Not in everything. It gives shape, but not in everything. Okay, it gives shape, but to the natural things only. Sustain life and growth. Yes, yes, Adya. Air sustains life and growth. Air is used to move things like helicopter. Yeah. Yeah, good, Shobit. Okay, so it means you all know what are the uses of air and how do we use air in our everyday life. Okay, fine. Okay, now tell me, what are the 3 types of gases? Any 3 types of gases which are present in air? Oxygen, nitrogen, carbon dioxide, hydrogen, yes, CO2. Yes, शोभित CO2 को ही फुल फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं. CO2 उसका केमिकल नेम है. ओके, दैट इज द केमिकल नेम. ओके, ऑक्सीजन का केमिकल नेम होता है O2. ओके, जब हम ऑक्सीजन को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं देन वी राइट इट एज O2. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड को लिखते हैं CO2. यस, हाइड्रोजन को लिखते हैं H फॉर हाइड्रोजन. यस, ओके. Yes, nitrogen also. Yes, there is one more gas, nitrogen, methane, helium. There are so many gases present inside Na. Yes. See, there are so many gases present inside the air. Okay, बहुत सारे gases होते हैं. Okay, air हमारा बहुत सारे gases का एक mixture है. It is a mixture of different gases. एयर में क्या होता है? डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, बैक्टीरियाज भी होते हैं, जर्म्स भी होते हैं और बहुत सारे अलग अलग गैसेस भी होते हैं. कुछ हमारे बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, कुछ हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं. ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, नाउ शो मी योर EVS sheet. Have you all completed the sheet? Okay, Adiba. Fine. Very good handwriting. Very good. Yes, handwriting is also too good. Okay, Sumia. Yes, your handwriting is also good. Okay. Okay, Shobhit has drawn the composition of air. Very nice. Very nice, Shobhit. Shobhit has drawn the pie chart which is showing the composition of air. Very nice. Yes, very good, Shobhit. Okay, Adya, as Afan. Good. Well done, Afan. Good. Prisha, have you completed? Okay, fine. Okay, Adya. Good. Yeah, fine. Okay, so our air
is mixture of different gases. And as Shobhit has shown us the pie chart, which is based on the composition of air, which shows the percentage of different gases present in our surrounding. Okay, हमारे सराउंडिंग में, हमारे एयर में जो अलग अलग गैसेस हैं उनका क्या परसेंटेज है. ओके, the percentage of air, the percentage of different gases which is present in our air. Okay, so there are so many gases which are present in our air, and you know the highest percentage gas, कौन से गैस का सबसे ज्यादा परसेंटेज हाइयर है, मींस सबसे ज्यादा हमारे एयर में है, दैट इज नाइट्रोजन. दैट इज नाइट्रोजन, अबाउट 78%. Earth's atmosphere is composed of about 78% nitrogen. Okay, approx 78% नाइट्रोजन है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंड 21% ऑक्सीजन. ओके, 21% क्या है, ऑक्सीजन, अप्रॉक्स 21%. ओके, मीन्स यू कैन से इन पॉइंट वाइज वो कम ज्यादा हो सकता है, बट वी कैन से ओके. एंड other gases are also present in our air, which are 0.17%. Okay, so we have different kinds of gases present in our air, okay, which have different composition. सबके अलग अलग कॉम्पोजिशन है, सब लोग अलग अलग मात्रा में, मीन्स अलग अलग वॉल्यूम में प्रेजेंट हैं. ओके, सो हमारे लेट मी शो यू वन स्क्रीन विच शोज यू द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर. लेट मी see everyone, is it visible to you all?
See, this is the composition of air. This is nitrogen. This is oxygen. Okay, these are the other gases, and this is argon, and this is carbon dioxide, which is present in our air in very less quantity, 0.03%. Okay, if you want, you can take screenshot of this composition of air. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए and you will draw. And आपको क्या करना है, इसका ड्रॉ करिएगा अपनी नोटबुक में. It will help you. और जैसे इसमें नोट किया है ना, जैसे इसमें लेबल्ड किया है डायग्राम में, इसी तरीके से आप भी ड्रॉ करके लेबल कीजिएगा. It will help you for understanding about air and different gases. Okay? You can take the screenshot of this. Thank you, Afza. Yes, nitrogen is present in our air as 78%. Yes. Okay.